Hello and welcome. Today in this video lecture, we are going to solve a practice paper of class 10 physics, that is according to the paper pattern of Khan University Examination Board. So चलते हैं हम अपने first question की तरफ, that is so here we have our first question. What is the total energy of the body oscillating with simple harmonic motion? So total energy की बात करें, so total energy equal होती है एक vibrating body की the sum of potential energy and kinetic energy. Kinetic energy और potential energy का जो sum है, it is equal to total energy. So vibrating from mean to extreme position and then back from extreme to mean position, the potential energy is converted into kinetic energy and kinetic energy is back converted into potential energy. So in this way, the total energy of the system oscillating with simple harmonic motion always remain the same until and unless the system is possess the damp oscillation. So right now the correct answer is option D. Then we have question number 2. The frequency of the pendulum does not depends on. So frequency of the pendulum is equal to 1 over 2 pi square root of L over G, or sorry, square root of G over L. तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है एक सिंपल पेंडुलम की. सो ये डिपेंड करती है ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ पर, लेंथ पर और इन अ वे इट्स वेट पर. सो the frequency of pendulum does not depends on the mass of the body. Option A is the right answer. Then we have question number 3. The type of wave that require medium is known as electromagnetic wave. So sound is a mechanical wave and microwave is electromagnetic, radio wave is electromagnetic and light is electromagnetic. So these three waves are electromagnetic that does not require medium for their propagation. So इन चारों में से जो मैकेनिकल वेव है इट इज द साउंड वेव जिसका नेचर लॉन्गिट्यूडनल होता है. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चंस. द टाइप ऑफ वेव विद इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो वो वेव जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट मौजूद होता है. इलेक्ट्रिक चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, दीज आर ईएम वेव्स. उन वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अमंग दीज फोर इज द रेडियो वेव. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. In a transverse wave, the particles of the medium always travel perpendicular to the direction of wave. Option B is the right answer. The other wave is a longitudinal wave जिसमें particles parallel to the direction of wave move करते हैं and this wave is known as longitudinal wave जिसकी example हमारे पास sound wave है. Question number 6. If the wavelength increases, what happens to the frequency of the wave? So we know that the relation between velocity, wavelength and frequency is V equals to lambda f. So अगर हम lambda और f को आपस में relate करें तो we will assume that velocity is constant. So f will be equals to velocity over lambda. If the velocity is constant, it means these two are inversely related. तो अगर हम wavelength को increase करते हैं तो उस वक्त frequency जो wave की है वो decrease हो जाएगी because ये दोनों आपस में directly proportional हैं. So option B is the right answer. Then we have question number 7. In the given figure, the arrow represents. तो यहाँ हमारे पास दो क्रस्ट के दरमियान का डिस्टेंस आइडेंटिफाई किया हुआ है दैट इज नोन एज वेवलेंथ, जबकि यहाँ जो एक वर्टिकल एरो या हाइट ऑफ द क्रस्ट को रिप्रेजेंट किया है इट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव. सो वेवलेंथ एंड एम्पलीट्यूड ये दो चीजें यहाँ पर रिप्रेजेंट की हुई हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. Let's see our next question, that is question number 8. At which position the velocity of the body will be maximum?
So we know that velocity is maximum when the body is at mean position. Mean position पे vibrating body की जो velocity है वो maximum होती है. So from this figure we can see that the position B is the mean position. Option B is the right answer. What happens to the energy if the ball released from the extreme position? अगर एक बॉल को एक एक्सट्रीम पोजीशन से, लेट सपोज दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, अगर इस एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज करते हैं तो रिलीज करने से इट विल मूव टुवर्ड्स द मीन पोजीशन और इस दौरान बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लूज होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन की तरफ ट्रैवल करते हुए बढ़ती जाएगी. So what happens to the energy of the ball if it is released from the extreme position? All potential energy will be converted into kinetic energy. So option B is the right answer. Extreme position से mean position की तरफ travel करते हुए body की, vibrating body की जो potential energy है वो gradually convert होती जाएगी into kinetic energy. Then we have question number 10. In this figure, which of the following direction shows the direction of restoring force? So vibrating motion या simple harmonic motion is occurred due to the presence of some restoring force और इस restoring force की वजह से एक vibrating body simple harmonic motion possess करती है and the direction of this force is such that it is always directed towards mean position. इस रिस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होती है, चाहे वो रिस्टोरिंग फोर्स हो या फिर एक्सेलरेशन हो, ये दोनों चीजें हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होती है. तो ये जो ऑप्शन डी है, दिस एरो शोज टुवर्ड्स द मेन पोजीशन. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. Then question number 11, we have to find the time period of a simple pendulum that is 120 meter long. So length हमारे पास given है 120 meters and the gravitational acceleration is 10 meters per second square. So यहाँ से हम time period का formula apply करते हैं. Time period is 2 pi square root L over G. तो यहाँ पर value substitute करते हैं और time period की value निकालते हैं. सो यह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद टाइम पीरियड हमारे पास आ जाता है 21.7 seconds. So let's round off to the nearest value, that is 21 seconds. Option B is the right answer. Then we have question number 12. The amplitude of the wave of vibration is. So amplitude की definition पूछी गई है. तो एक vibrating body में जो amplitude है वो मेन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक की जो डिस्प्लेसमेंट होती है एक वाइब्रेटिंग बॉडी की, या जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है मेन पोजीशन के से एक्सट्रीम पोजीशन तक, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट द मैक्सिमम चेंज ऑफ पोजीशन फ्रॉम द अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, जिसका मतलब है मीन पोजीशन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. During a tennis match, a boy paced back and forth along the sideline in 8 times in 1 minute. So, frequency हमें मालूम करनी है. So, frequency का मतलब है 8 times in 60 seconds. So, 8 divided by 60 will be equal to 0.133 Hertz. So question number 13, option C is our right answer. Then we have question number 14. A wave has a frequency of 2 Hz and a wavelength of 0.15 meter, that is the wavelength. And we have to find the speed of the wave. So it's a simple formula, V is equals to lambda F. Lambda is 0.15 multiplied by frequency 2. So the answer will be 0.3 meter per second. So the correct answer is option A. Which of the following does not produce sound wave? कौन सी केस के अंदर साउंड वेव प्रोड्यूस नहीं होगी? So option D is the right answer, an explosion in the outer space. Because in outer space there is no medium and a sound is a wave that requires medium for its propagation,
In this way, option D will be the right answer. Which of the following is not a characteristic of a mechanical wave? कौन सा characteristic नहीं है कि mechanical wave का? So wave is a wave. They transport energy. They are created by the vibrating source. They do not transfer matter, and they are transverse wave. So all the energy, the main function of the energy is to transport wave. Main function of the wave is to transport energy. So option A is correct. They are created by the vibrating source. हर wave, mechanical wave जो है वो vibrating body की वजह से produce होती है. They do not transfer matter. That is absolutely correct because these wave only transfer the energy. They are transverse wave. This is the incorrect option because mechanical wave are not only transverse wave but they are also longitudinal wave. So इस तरह से option D हमारा right answer है. Then question number 17. How many waves are given in this diagram? So we know that the crust and trough. This crust and this trough will make one wave. Then we have another crust and another trough. These will make one another wave. So in this way, we have total of 2 waves in this diagram. What will be the wavelength of the water waves if the vibrator produces 10 waves for 5 seconds? So ये हमारे पास जो है वो number of waves है. We have this time. So from this we can calculate the frequency और यहाँ हमें जो है वो wavelength मालूम करनी है. Let's see question number 19. A point P marked on a rope before the rope is set to oscillate at a particular direction. What is the direction of motion of point P? So as we can see, ये हमारे पास जो है वो right direction में wave की direction दी हुई कि इस direction में wave travel कर रही है carrying the energy. और अगर हम इस पॉइंट को देखें तो इस पॉइंट के थ्रू ये जो क्रस्ट वाला पार्ट है वो पास हो चुका है. अब इस पॉइंट के पास से ये ट्रफ गुजरने वाला है. तो जैसे ये वेव आगे ट्रैवल करेगी तो इस पॉइंट पी के पास से ट्रफ गुजरेगा और ट्रफ के केस के अंदर ये पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और जब ट्रफ गुजर रहा होगा तो जो लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पॉइंट पी लाई करेगा. तो इन दिस वे दिस पार्टिकल पी विल मूव in downward direction. Option D is the right answer. A source produces longitudinal and transverse wave. The difference between both wave is the frequency of the source, direction of propagation, speed of propagation and length of the wave. So longitudinal wave और transverse wave के दरमियान जो एक main difference है वो है उनकी speed का. That longitudinal waves की जो speed है वो transverse wave से ज्यादा होती है. So option C is the right answer. Then we have question number 21. If a sound is traveling through a solid at a speed of 2280 meter per second, so we have this speed and a frequency of 19 hertz. Wavelength हमें मालूम करनी है. So lambda will be equals to V over F. The V is 2280 and F is 19. तो इन वैल्यूज को हम डिवाइड कर देते हैं. 2280 डिवाइडेड बाय 19. सो द करेक्ट आंसर इज 12 मीटर. तो यहां से हमारे पास जो आंसर आएगा इट इज इक्वल्स टू 120 मीटर. सो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा. The term that describe how a noise or a musical note sounds to us is the amplitude of the wave. कि म्यूजिकल साउंड और नॉइस के दरमियान जो चीज डिफ्रेंशिएट करती है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है. बिकॉज अगर इरेगुलर वाइब्रेशन है, इरेगुलर एम्पलीट्यूड है तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होगी इट विल बी अ नॉइस. Magnitude of auditory sensation produced by a sound on a hearing air is called. Then we have question number 24. The physical quantity which is related to loudness is the amplitude, because greater the amplitude of the wave,
greater will be the loudness. So option B is the right answer. Question number 25. Which of the following statement applies to a damping acting on a vibrating system? कि अगर damping हो रही है vibrating system में तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है? सो डैम्पिंग के अंदर बॉडी की वाइब्रेटिंग बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता रहता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स. सो इट्स मीन इट विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एज द वेलोसिटी. ऑप्शन डी we will make it a right answer. Then see question number 26. What is the angle of reflection in this given diagram? So this is normal, this is incident ray and this is reflected ray. So I और N के दरमियान this is angle I and this is angle R. So option A is the angle of reflection. Now let's see question number 27. Incident ray, refracted ray और emergent ray को हमें identify करना है. So this is normal, this is incident ray, this is refracted ray and this is emergent ray. So AB is the incident ray, BC is the refracted ray and CD is the emergent ray. Option A is the right answer. Question number 28. Refractive index of water we have used many times in the numerical and the refractive index of water is 1.33. Ray of light traveling from medium P to medium Q. एक रे ऑफ लाइट है जो कि P मीडियम से Q मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही है. इफ द मीडियम हैज हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन Q, इट्स मीन दिस इज medium P is the dense medium and Q is the rare medium. और to form a critical angle और साथ साथ नॉर्मल के साथ जो है वो एंगल इंसिडेंट रे का क्रिटिकल एंगल फॉर्म हो रहा है. तो वी नो दैट व्हेन क्रिटिकल एंगल इज फॉर्म while of light while traveling from dense to rare medium, the refracted ray becomes perpendicular to normal. तो normal के साथ जो 90 डिग्री बना रही है रे, this will be the refracted ray. So option A is the right answer. For all transparent medium, index of refraction is always greater than 1 because refractive index is equal to 1 is only for air or vacuum. एयर और वैक्यूम के अलावा तमाम मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1 से हमेशा ज्यादा होता है और greater the refractive index, the greater will be the bending when a light passes through that medium. And index of refraction is less than 1 for medium would means कि अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइट की स्पीड है वो उस मीडियम में एयर से भी ज्यादा होगी. दैट इज द इम्पॉसिबल, क्योंकि लाइट की स्पीड एयर और वैक्यूम से ज्यादा किसी भी मीडियम के अंदर नहीं होती. और अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से छोटा है तो इसका मतलब ये निकलता है मैथमेटिकली दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम इज ग्रेटर देन एयर और वैक्यूम. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कि मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट एयर से भी ज्यादा होगी. When a light ray passes from a vacuum into a block of unknown material, the major index of refraction is 3.5. What is the speed of light in that block? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, वेलोसिटी हमें मालूम करनी है. We know that n is equal to the speed of light divided by velocity in that medium. So v निकालने के लिए हम c को यहीं रहने देते हैं और n को डिवाइड कर देते हैं such that c is the speed of light in vacuum 3 exponent 8 meter per second. So वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, n की वैल्यू 3.5 है और इसे हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं. So the result is 8.57 times 10 raised to the power 7 meter per second. So correct answer will be option B. Question number 33. Light traveling at an angle into the denser medium is refracted away from the
टूवर्ड्स द नॉर्मल, कि अगर लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है इनटू द डेंस मीडियम, सो इट्स मीन लाइट इज कमिंग फ्रॉम द रेयर मीडियम, और रेयर से डेंस में जाते हुए लाइट हमेशा टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Then we have question number 34. If a wire hangs between the poles, what is the when there is a current, in which direction the wire will move? So यहाँ हमारे पास current की direction given है plus and minus. So current is traveling in this direction and the magnetic field is in this way. This is the direction of magnetic field. So अगर हम अपने left hand के according यहाँ इसके ऊपर लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल अप्लाई करें तो वी कैन सी दैट कि हमारा जो थंब है वो पॉइंट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Two coils of different diameter are placed in the same magnetic field. If the magnitude of a magnetic field is increases with time, then the induced EMF it will be greater in the coil 1. क्योंकि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करते हैं तो इंक्रीज करने से देयर विल बी अ चेंज ऑफ फ्लक्स, चेंज ऑफ फ्लक्स होगा और उस चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से इन कॉइल्स के ऊपर ईएमएफ इंड्यूस होगा, और चूंकि एरिया ज्यादा है कॉइल 1 का जिसकी वजह से उसके ऊपर ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। A wire lies perpendicular to the horizontal uniform magnetic field. तो यहाँ हमारे पास नॉर्थ से साउथ तक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। If the force is exerted on this length of the wire due to the current in it is downward. So downward direction में इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है और हमें यहाँ पर करंट की डायरेक्शन को मालूम करना है। So अगर हम यहाँ पर भी अपना लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल अप्लाई करें सच दैट कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रही है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, सो लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो होगा फ्रॉम क्यू टू पी। डायग्राम हमने यहाँ 2 डायमेंशनल बनाई है बट हम अगर लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर फोर्स और फील्ड की डायरेक्शन को प्लेस करें विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, सो वी कैन सी दैट the direction of current will be from Q to P. Option B is the right answer. Then we have question number 37. The diagram shows a vertical square coil whose plane is at right angle to the horizontal uniform magnetic field. Which of the following statement is correct? The force on two vertical sides of the coil are equal and opposite. A couple acts on that coil. No force acts on the horizontal side of the coil, and if the coil is turned through a small angle about this, it will remain in its position. So सवाल के अंदर क्योंकि 3 स्टेटमेंट करेक्ट है तो हम यहाँ पर जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करते हैं दैट विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो 2 साइड्स हैं वहां पे फोर्स अप्लाई होगी जबकि 2 साइड्स पर फोर्स अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पर ये जो साइड प्लेन की मौजूद है यहाँ कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगी बिकॉज यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और करंट आपस में पैरेलल है। तो ये जो 2 अपोजिट साइड्स हैं यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर वर्टिकल साइड्स के ऊपर फोर्स अप्लाई होगी जो कि बराबर है और ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगी। ऑप्शन इज करेक्ट। इन फोर्सेस की वजह से कपल फॉर्म होगा और नो फोर्स एक्ट्स ऑन दी हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ द कॉइल, तो यहाँ पर फोर्स इस एंड के ऊपर 0 होगी और यहाँ पर भी इस एंड के ऊपर फोर्स 0 रहेगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कि अगर हम ओ प्राइम की डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो वो कंटिन्यूस रोटेट करेगा। सवाल ऑप्शन के अंदर कह रहे हैं कि इट विल रिमेन इन इट्स पोजीशन, सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 के अंदर हमारे पास 2 डायग्राम्स मौजूद है जिसमें हमें पोल्स जो लेफ्ट हैंड साइड पे मैग्नेट मौजूद है उसको उसका पोल बताना है। तो एज वी कैन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पोल के अंदर एंटर हो रही है जबकि यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पोल के अंदर
एंटर हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंटर्स इनटू द साउथ पोल। इसका मतलब है कि ये दोनों साउथ पोल्स हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Then we will see question number 39. Which of the following does not follow the Fleming's left hand rule? Fleming left hand rule कौन सी डायग्राम के अंदर फॉलो नहीं हो रहा? तो एज वी कैन सी कि ऑप्शन बी हमारे पास है जो कि एक राइट हैंड बना हुआ है, जबकि बाकी तीनों डायग्राम जो है वो लेफ्ट हैंड की हैं। तो ऑप्शन बी इज द इनकरेक्ट, दैट डज नॉट फॉलो द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. When AC supply is given to the transformer, the magnetic flux depends on which of the following component? So the flux depends on the current, the amount of current जो कि प्राइमरी कॉइल के अंदर फ्लो हो रहा है, उस अमाउंट ऑफ करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज आएगा इन अ नियर बाय कॉइल, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द प्राइमरी कॉइल. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. The primary and secondary winding of transformer are linked to each other by mutual induction, the main process that is involved in the working of a transformer. Then we see 42, question number 42. The secondary current in a step down transformer. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वोल्टेज है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी वोल्टेज, बिकॉज जो काम है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का वो है वोल्टेज को डिक्रीज करना. सो ये वाली वैल्यू प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा होगा और जो सेकेंडरी का वोल्टेज है वो हमेशा कम होता है. इसी तरह प्राइमरी कॉइल के जो टर्न्स हैं वो ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी number of turns in secondary coil, but the current in primary coil is less than the current in secondary coil. So secondary coil का जो current है वो ज्यादा होता है as compared to the primary coil. So the correct answer is option B. The process of emitting electron from the heated metal surface is known as thermionic emission. Let's see question number 45. A NOT gate has only one input and one output. NOT एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसका सिर्फ एक इनपुट होगा और सिर्फ एक ही आउटपुट होगा. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. देन वी हैव अ डायग्राम जो कि एक NAND गेट की मौजूद है. तो ऑप्शन डी जो कि राइट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 47 में देखें तो यहाँ हमारे पास एक नॉट गेट मौजूद है, यहाँ हमारे पास एक NAND गेट मौजूद है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, नॉट एंड NAND गेट. Now let's see question number 48. The combination of this logic gate is equal to. तो यहाँ हमारे पास एक और मौजूद है, यहाँ हमारे पास नॉट गेट मौजूद है और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इट इज NOR गेट. Then all the logic, a logic gate process all the data in the form of electric signals. ये जो तमाम लॉजिक गेट्स होते हैं वो तमाम लॉजिक गेट्स जो है वो वर्क करते हैं और उनसे जो डेटा ट्रांसफर होता है या जो इनपुट जाता है वो एक इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में होता है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Let's see the last question of this practice paper. Which logic gates are in the given circuit is known as inverter. So not gate जो है जो कि इन्वर्टर भी कहलाता है. So this is the not gate, this is the NOR one and this is the NAND logic gate. So B और D के दरमियान जो एक लॉजिक गेट लगा हुआ है this is the inverter or the not gate. So in this way option B is our right answer.